हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के टॉप साइंस क्वेश्चन जो पिछले वर्ष में एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, एक 100 डेज चैलेंज है। इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द रेलवे ग्रुप डी एग्जाम। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो इज, लाल अस्थि मज्जा का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ओके, रेड बोन मैरो इज ए सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू इन द सेंटर ऑफ बोन्स दैट प्रोड्यूस ब्लड सेल and it contains stem cell that develop into RBC, WBC and platelets. Okay, so function of red bone marrow is formation of blood cell. What is the cause of muscle cramp? मसल क्रैम्प का कारण क्या है? The answer is insufficiency of oxygen supply to muscle. Okay, insufficiency of oxygen supply to muscle. This is the cause of muscle cramps. White blood cell are also known as, सफेद रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है? Answer is leukocytes. Okay, leuko means white and cytes means cell. Leukocytes are a type of blood cell that help your body fight infection and disease, and they are part of our immune system. Okay, so white blood cell का दूसरा नाम है leukocytes. Which of the following transport food, carbon dioxide and nitrogenous waste in a dissolved form? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को डिजॉल्व फॉर्म में स्थानांतरित करता है? सो आंसर इज प्लाज्मा. ओके, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल, that is formed element, and while plasma is a liquid portion of blood, it is a straw colored fluid that suspend these cells, that is blood cells. Okay, and amount of plasma is 55% in a blood and blood cell amount is 45%. Okay, so plasma transport food, carbon dioxide and nitrogenous waste in dissolved form. What is the effects of exercise on circulatory system? सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्सरसाइज का क्या प्रभाव होता है? सो आंसर इज इट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इट डिक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड इट आल्सो इंक्रीज साइज ऑफ हार्ट. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, सो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम इज increase stroke volume, decrease cholesterol level and increase in size of heart. What is cardiac cycle? Cardiac cycle क्या है? A cycle that contraction and relaxation of the heart. Okay, that is cardiac cycle. Heart muscles are, heart muscles किस तरह का होता है? It is a cylindrical, branched and single nuclei. Okay, this is the features of heart muscle or cardiac muscle. It is a cylindrical, branched and it has a single nuclei. Which of the following is the major function of platelets? Platelets का major function क्या है? Answer is clotting of blood. Blood clotting, also known as a coagulation, is the process of blood formation a clot to stop bleeding. Okay, so major function of platelets is clotting of blood. Human blood is red in color because of the presence of which component? The answer is hemoglobin in red blood cell. Okay, hemoglobin in red blood cell. Hemoglobin, it contains iron pigment. Okay, so it shows red color. The blood vessels that carry blood from heart to various parts of the body are called. वो रक्तवाहिका जो हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे ब्लड को फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं? द आंसर इज आर्टरीज. ओके, arteries are strong muscular elastic blood vessels that carry oxygen rich blood
from the heart to body's tissue and organs, forming a crucial part of the circulatory system. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.